Good morning students. Today in this video we are going to cover chapter 3rd of history, which talks about what's happening in the earliest cities. So in this particular chapter we will be focusing on Harappa civilization, and we will see what kind of houses, drainage systems, street patterns were available at that period. What were the structures of houses and drains and streets? What were the life in the city? What was the crafts in the city? And for those crafts, so from where they obtained the raw materials from, and then how this civilization ended, and what are the like we will do the case study also of two Harappan towns of Gujarat, that is Dholavira and Lothal. We will also understand what was happening in the contemporary world at that period. So the chapters begins with the story of Harappa. If I start that nearly 150 years ago, most of the remains of the Harappa civilization were extracted by Britishers, but all the remains which were there more or less were destroyed. Still, by 80 years ago, archaeologists found the site and realized that there was one of the oldest cities in the subcontinent, and the first city to be discovered, and all other sites from where similar buildings were found was described as Harappan. So these cities developed around 4,700 years ago. सो एज आई एम सेइंग कि ज़्यादातर रिमेन्स जो थे ब्रिटिशर्स ने जब एक्सट्रैक्ट किए थे वो जो थे डिस्ट्रॉय हो गए थे. उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसमें दिया गया कि जब रेलवे लाइंस जो थी वो बिछाई जा रही थी इस कंट्री में, द फर्स्ट टाइम इन पंजाब, तो इंजीनियर्स कम अक्रॉस अपॉन अ साइट of Harappa in the present day Pakistan, but with what they didn't research on that, they just took it as a rich source of ready-made high quality bricks, and so they carried thousands of bricks from the walls of the old city, of the buildings of the city, to build the railway line. And this is how they completely destroyed the evidence which could have been very, very important for understanding the cities. So when we talk about Harappa, we need to understand what was special about these cities. We need to understand what kind of houses, drainage system, street pattern was there, and we will try to understand all this relating to Harappa. First of all, let's understand the city structure, right? And when we talk about the city, we should understand that the cities were divided into two or more parts. So that these basically two parts, the part to the west was smaller, and the part to the east was larger, but the part on the west was higher, and it was called as citadel. Whereas the eastern part, as I told you, it is larger, but it is lower in height, and that's why it is called lower town. So there were two parts, citadel and the lower town. डायरेक्शन वाइज था, सिटाडेल वेस्ट के अंदर और लोअर पार्ट आपका ईस्ट के अंदर. और जो ब्रिक्स वगैरह बहुत अच्छे से मिली हुई थी, द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न विच इज यूनिक टू हड़प्पन सिविलाइजेशन. इंटरलॉकिंग पैटर्न क्या होता है, कभी आप कोस्टल एरिया में जाते हो ना, तो बहुत सारा होता है, टाइल्स जो है या जो ब्रिक्स हैं एक हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ऐसे करके एक दूसरे में फंसाई जाती है, जिससे वो स्ट्रांग हो जाती है. सो दिस इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑफ ब्रिक्स वाज यूनिक टू हड़प्पन सिविलाइजेशन. सो यहाँ पर हमने ब्रिक्स के बारे में पढ़ लिया. यहाँ पर हमने सिटी के इन दो पार्ट्स में डिवाइड की गई थी, उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया. इसके बाद एक और यूनिक स्ट्रक्चर था मोहनजोदाड़ो का, दैट वाज द ग्रेट बाथ. सो अ वेरी स्पेशल टैंक जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया ग्रेट बाथ का, वॉज बिल्ड इन दिस एरिया. दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स, कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल tar, so that there is no leakage or no seeping of water from this. टेक्नोलॉजी थी कि पानी कीमती है, यहाँ पर उसको किस तरह से स्टोर करने के लिए कैसे वो एयर टाइट वे में बना रहे हैं. यू कैन सी देयर, यहाँ से हम रिलेट करते हैं कि वाटर वॉज कंसिडर्ड वेरी वेरी प्रीशियस एट दैट टाइम ऑल्सो. देयर वर स्टेप्स leading down to it from both the sides, while there were also rooms all across that, all from all sides there were rooms. Water was probably brought down in from a well and drained out in for use, and perhaps important people took a dip in this tank.
और बहुत कुछ जो है इसमें हमारी लाइक देयर इज नथिंग एक्सलाइज एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि हड़प्पा के बारे में जो रिटर्न इंस्क्रिप्शंस है वो आज तक भी हम डेफर्ड नहीं कर पाए, उनको आज तक भी हम रीड करने में कैपेबल नहीं है। अनदर सिटीज जैसे कालीबंगन राजस्थान में एंड लोथल हैड लाइक फायर आल्टर्स, यानी कि जहाँ पर सैक्रिफाइसेस आपके होते थे, रिचुअल्स होते थे ये आपके, वो हैं कालीबंगन और लोथल में। एंड सम अदर सिटीज लाइक मोहनजोदारो एंड हड़प्पा हैज एलोबरेट स्टोर हाउसेज भी थे, यानी कि ट्रेडिंग हो रही थी तभी स्टोर हाउसेज वहां पर इतने बड़े थे। तो यहाँ तक इतना समझ आता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेज, ड्रेन एंड स्ट्रीट्स, एंड इट इज अ मार्वेलस marvelous type of city planning was there, marvelous system of drainage was there। और इस सिस्टम को समझ के हमें ये समझ आता है कि लाइक बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिकली इंजीनियर्ड था ये एरिया। लाइक अगर मैं घर से शुरू करूं, इफ आई टॉक अबाउट द हाउसेज वर ईदर 1 or 2 स्टोरीड होते थे विद रूम बिल्ट अक्रॉस अराउंड द कोर्टयार्ड, बरांडे के आसपास जो है आपके कमरे बने होते थे। एंड मोस्ट हाउसेज हैव अ सेपरेट बेथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई ऑल्सो फॉर एवरी होम। सो दिस इज यूनिक थिंग, दिस वॉज वेरी एडवांस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी कि बेथिंग एरिया भी आपका अलग है और वाटर की वेल है हर घर में वाटर सप्लाई के लिए। यानी कि लोग इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने वेल्स बनाए थे, दूर दूर नदियों से पानी ढो के नहीं ला रहे थे वो लोग, तो देवर लाइक स्मार्ट पीपल। यहाँ से हम ये रिलेट कर सकते हैं। Like many of the cities have covered drains, you know, like covered drains का मतलब कि they were well aware about the conscious about the healthy environment they need to keep, and as the drains were covered after intervals to cleaning these drains, there were inspection halls also there, right? And all the 3 houses, drains and streets were probably built at the same time, like पूरा सिटी को प्लान करके। ऐसे नहीं कि एक चीज ऐसे बन गई दूसरी यहाँ बन गई, क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम्स जो हैं, प्रॉपर जेंटल स्लोप है वाटर के फ्लो के लिए, और ड्रेन्स जो हैं हाउसेज से और स्ट्रीट से, ये स्मॉल ड्रेन्स जो हैं वो कनेक्टेड है एक बिग स्ट्रेन में, यानी कि पूरी सिटी प्लान करके बनाई गई है। ऐसा नहीं कि रेंडमली somebody started living there and somebody there and then it has become a settlement। No, it is evident from the time like drainage planning and all that every house was like entirely planned and then laid out, because घरों से जो नालियां आ रही हैं, जो और दूसरी नालियां हैं, वो एक मेन ड्रेनेज के अंदर जा रही हैं, यानी कि वो पहले से ही उनका आइडिया था कि यहाँ यहाँ ये चीज बनेगी। तो दे हैव वेरी 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 वेल मेंटेन्ड ड्रेनेज सिस्टम। Now, second thing which was evident is this region was not having abundance of rainfall. That was important why the water was stored, and that's why every house was having well। So उनको वहाँ पर पानी की कमी थी, इतनी नदियाँ नहीं थी, मतलब कुछ ना कुछ तो कमी थी, abundant rainfall नहीं था, तो लोग जो थे वाटर को सेव करके या स्टोर करके घरों में चल रहे थे। Now coming on, how was the life in the city? And what were the activities the rulers were engaged into? The rulers were engaged in construction activities. Like we have seen construction of special building in the cities, and these were probably the rulers who were doing this, क्योंकि रूलर्स वहां पर बहुत ही मेटल जो उस एरिया में अवेलेबल नहीं था उसका यूजेस दिखाया है, प्रीशियस स्टोन्स का यूजेस दिखाया है। दैट मीन्स द किंग वाज अरेंजिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स फॉर बिल्डिंग द सिटी, एंड दे वर यूजिंग दिस काइंड ऑफ सिटी। तो किंग अरेंज करा रहा था। दे मे बी केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज लाइक ऑर्नामेंट में गोल्ड और सिल्वर का यूज दिख रहा है, जो कि शायद रिच क्लास यूज करती थी, और ब्यूटीफुल बीड्स का जो है, जो कि यूनिक है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए, वो बीड्स का यूजेस भी है। और फिर स्क्राइबर्स होते थे, लाइक स्क्राइबर्स आर द पर्सन हु न्यू हाउ टू राइट, who like helped to prepare the seals. These seals were also unique feature of Harappan civilization, and we have seen various kind of seal. On page number 35 you will see seals also. It is having some writing and some symbols of animals, right? These are the like earliest form of writing known in this subcontinent, but the thing is that we are not till date are able to understand what the people of that time have written on these seals. Like ये see जो writing है ये decode नहीं कर पाए, हम इसको defer नहीं कर पाए हैं आज की डेट में भी, और these can't be read, तो हम इनको पढ़ ही नहीं पाए हैं। लेकिन like kings थे
स्क्राइबर्स थे सोसाइटी के अंदर, उनके अलावा क्राफ्ट्स पर्सन थे who are making like different kind of things either in their home or in special workshop. People were traveling also to distant land and returning with raw material and perhaps many stories. Many terracotta toys were like found. Maybe the children have been playing with them. तो वो उस चीज को terracotta tiles भी toys जो आपकी फिगर में दिखा रखे हैं वो भी दिख रहे हैं कि टेराकोटा का यूज किया जाता था. Then there were like when we talk about the craft of the city, stone weights were used for weighing as weighing tools. जो हम वेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था उसमें स्टोन का यूज किया था. एंड दे वर प्रिसाइजली दीज वेट्स वर शेप्ड एंड दे वर मेड फ्रॉम अ स्पेशल काइंड ऑफ स्टोन known as chariot, and probably they are used to weigh the precious stones or metals. And as I have told you that beads were there and they were made of from carnelian, a beautiful red kind of stone was cut, shaped, polished, and finally a hole was like being done in this bead so that the string could be passed on and it can be worn as a ornament. Right, next we have found embroidered cloth also. A stone structure of man is found in the Mohenjo-daro, and that picture was showing he was wearing a embroidered garment. So see what we can relate कि उस टाइम पे एम्ब्रॉयडरी भी आती थी और ऐसा डिपिक्ट भी करके दिखाया गया है. बियर्ड वाला आदमी है और बहुत बॉर्डर एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ पहना. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, इससे हमें क्या पता लगता है कि लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वर फाउंड बाय द आर्कोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल. कॉपर का यूज था, ब्रॉन्ज का, गोल्ड एंड सिल्वर का यूज था. कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स, वेयरएज गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेपन्स. लाइक एंड इसके अलावा आपको स्टोन के बीड्स मिली हैं, स्टोन के बेड्स मिले हैं. ठीक है. एंड द एक यूनिक चीज जो मैंने बोली थी, सील्स बहुत यूनिक थी. द हड़प्पन्स आल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन दैट आर जनरली रेक्टेंगुलर थी और उन सील्स पे एनिमल्स की कार्विंग्स होती थी. राइट. और वो हड़प्पन्स जो थे बहुत ब्यूटीफुल पॉट्स भी बनाते थे ब्लैक डिजाइन्स के. राइट. एंड नाउ अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के अंदर पहले जो प्रोबेबली कॉटन जो थी मेहरनगढ़ में 7000 ईयर पहले उगाई जाती थी. ऐसा हमें किस एविडेंस से पता लगता है? हमें एक सिल्वर वेस मिला है जिसके ऊपर वो कॉटन का जो क्लोथ पीस है वो अटैच्ड है उसके ऊपर. राइट. इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को स्पिंडल वोल्स भी मिलते हैं. स्पिंडल वोल्स क्या होते हैं? जिनके ऊपर आप धागा लिपेटते हो और बाद में जब आप वीविंग करते हो क्लोथ की तो उसके ऊपर से वो आता है. तो जो ये स्पिंडल वोल्स थे ये स्पेशली टेराकोटा या फिंक से बनते थे. नाउ दिस व्हाट इज फिंक इंपॉर्टेंट है, ये डायलॉग बॉक्स में प्लीज अंडरलाइन दिस थिंग. अ फिंक इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड from a gum which was used to shape sand with sand and powdered quartz to like give it a shape. So it is a जितने भी इससे ऑब्जेक्ट मिलते थे वो शाइनी ग्लासी काइंड ऑफ थे. तो it was also used and for the spinning of the thread. Now there were specialists who were like doing various kind of work regarding the beads. They were like cutting, polishing and curving the beads, or they are also carving the seals also. So we don't know whether only men were specialists or only women were specialists, but there were people in the society who are like specialized to do this kind of work for cutting stones. So now the question is like from where they are like getting the raw material from. So first of all we need to understand that raw materials are substances which are either found naturally such as wood or ores or metals, or they can be produced by the farmers or hydrolls also, and then they are processed and some finished goods are made from them. So in Harappa civilization we have got evidences that they were like getting copper from present day Rajasthan. Then they were getting it from Oman also, which is in West Asia. Tin was what is a tin? Tin is like mixed with it is a mixed which was mixed with copper to produce bronze, and this was brought from present day Afghanistan and Iran. Then there was gold which was coming from present day Karnataka, and precious stones were coming from Gujarat, Iran and Afghanistan. So what we need to learn over here that the
trading between different regions internationally and nationally, it was happening, and trade was very flourishing at that time. Now if we talk about the agriculture, the people were having settled kind of agriculture. It was evident from the history, and the people of Harappan, like they were growing crops and rearing animals. They were doing like farmers, herders were supplied food to craft persons, yeah, inscribers and rulers, etc. And they were growing wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. They were using a new tool that was plow, which was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds, and it was probably made of wood, it is found. And some form of irrigation may have been like used, because this area was not receiving heavy rainfall. That is why the concept of well was there in every house. So, and the Harappans were like rearing cattle, sheep, goat and wolf. So water was like very useful, and it was preserved, and the settlements were around the pastures and the water areas, because people were like doing certain kind of activities, and they were headers, so they need the grass for their animals, and the water is, as I told you earlier also, it was a required very request. So they were settling around the places which are having water and pastures. Now if we take about a closer look of two towns of Harappa in Gujarat, one is Dholavira, which is like on Khadir belt in run of Kutch, and where there was fresh water and fertile soil, so the establishments were there. Now it was like divided into two. Like earlier cities, we have read that means Harappan civilization cities were divided into two parts. This Dholavira is divided into three parts, and each part was surrounded with massive stone walls, which was like which have entrance for gateways. There were large open area in the settlements where public ceremonies might have happened. Other finding about this thing is कि large letter of Harappan scripts were carved out of white stone and perhaps inlaid in water. So अभी writing तो Harappan civilization की हम defer ही नहीं कर पाए हैं, तो वो एक अलग चीज़ है. इसके बाद जो second city है, that is Lothal. It stood beside the tributary of Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of Khambat, and इसके आसपास जो है प्रीशियस स्टोन्स बहुत इजीली अवेलेबल था, और ये सेंटर था स्टोन, शेल और मेटल के ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने के लिए. बहुत सारी सील्स और सीलिंग्स जो है यहाँ से हमें मिली है. नाइट देयर वी हैव फाउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर हाउसेज ऑल्सो. डॉकयार्ड भी मिले हैं. डॉकयार्ड यानी कि जहाँ पर शिप्स आके रुकती थी, और जो मतलब आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल पोर्ट का टाइप्स का काम कर रहा था. सील और सीलिंग के बारे में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है. क्यों? क्योंकि ये बहुत ही यूनिक रही है हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर. ये जो इनके इम्प्रेशंस थे, क्या है सील्स पे लिखा हुआ, वो तो हम पूरी तरह से अभी भी डिकोड नहीं कर पाए. Now we need to understand what was the reason why the Harappan civilization declined, and various learned people, scholars have different reason for them. For some suggest like the rivers must have dried up, there must be water scarcity, so the people have been moved. Other were saying that because they were herders, maybe like deforestation kind of thing has happened. लोग बना रहे हैं, bricks बना रहे हैं, houses भी बन रहे थे, cities भी बन रही थी. तो maybe because of the deforestation, this civilization could have been ended up. Then they were saying कि is this deforestation maybe have led to the floods, and उसकी वजह से जा सकता है, या floods के reasons की वजह से ending हो गई. Flooding or a river drying up would have had an effect in only some areas. So there is no strong proof of what exactly have happened, but these are the, and one more saying is it appears like if the rulers have lost their control. And in any case, the effect and changes are quite clear. Sites in Sindh and West Punjab, right now it's in Pakistan, were abandoned, or while many people moved into newer and smaller settlements to the east and the south, right? और फिर नई सिटीज़ जो आई इसके 1400 ईयर के बाद आई, जिनके बारे में हम आगे बुक में पढ़ेंगे. नाउ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में इस टाइम क्या हो रहा था, इसमें एग्जाम्पल दिया गया इजिप्ट का. नाइल सिटी सिविलाइजेशन के बारे में फोकस है.
इजिप्ट जो कि मोस्टली एक ड्राई डेजर्ट था, जो नाइल रिवर थी उसके पास का एरिया एक फ्लोरिशिंग था, और अराउंड 5000 ईयर पहले की ये बात है। वहाँ का जो यूनिक पैटर्न था वो दैट वाज पैरामिड्स वर लाइक बिल्ड ह्यूज टॉम्स दे वर नोइंग, एंड दे वर यूज्ड फॉर लाइक प्रिजर्विंग द dead bodies of kings and buried in these pyramids. These dead bodies are very carefully preserved and known as mummies, and large number of objects are buried along with them, like things like food, items to drink, clothes, ornament, utensils, musical instruments, also weapon and animals. Sometimes even serving men and women were like buried with the ruler. So burial practices was happening, and this we have like learned in your next chapter also. We have covered books and burials, and in that I have told you about the things or the mentality behind keeping all these things in the burial. So hereby we have finished this chapter, and that's all from my end. Give thorough reading, and whatever your doubts we will be taking in the doubt class today. Okay, bye for now.